which strikes to keep on radar. So talking about Nifty, I'll start with how the day went. We've seen that the index did open on a positive note, but then later it could not sustain at higher zones. It failed to hold above 19,867 zones, and drifted lower throughout the day. So throughout the day, we've seen that the index has been drifting lower, and continuously there can be seen selling pressure at every small little bounce. So overall, the setup is likely to remain in the negative side. So we are tracking puts as of now. Now, to talk about the support zones, Nifty, has broken its crucial support of 90,700 zones, which it was respecting on the previous day. So we're 50 points down from those levels, and we can see that I'll just check the option data, uh, you know, figures as well. तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है सुबह से ही सेलिंग प्रेशर में रहा है, और अभी 19,700 के नीचे है, which indicates that quite a lot of pressure is intact. अगर हम ऑप्शन डेटा की बात करें तो हमने देखा है कि बहुत सारा जो कॉल राइटिंग है 19,700 पे हुआ है, तो क्लियरली यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस जोन्स है 19,700 पे वो काफी हद तक इंटैक्ट है, और पुट राइटर्स जो है वो काफी अपना पोजीशंस अनवाइंड किए हैं एट 19,750 लेवल्स. सो ये एक लेवल है जहाँ पे पुट राइटर्स ने अपना अनवाइंड किया है पोजीशन, तो क्लियरली एक इंडिकेशन था कि प्रेशर में है, सेलर्स एक्टिव है. फिलहाल हीरो जीरो के लिए हम ट्रैक कर रहे हैं. वी आर ट्रैकिंग 90,650 and 90,700 puts. So these two strikes are on radar. Of course, we talk about Bank Nifty, and we'll come back to these strikes, and we'll talk about which levels to track for. Yeah. So thank you, Shivangi. So now talking about Bank Nifty. We have seen good gap up opening in Bank Nifty. However, since morning, it failed to hold 46,300 zones and gradually drifted lower towards 45,700, 45,800, 45,700. So सुबह से हम देखें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा सेलिंग प्रेशर है. हम काफी टाइम से देख रहे थे 45,900 was a major support zone. So in the morning, first we tried few trades. Then when it breaches 45,900, we went on the put side and play with a couple of put side of 45,800, 45,700. Along with that, as it's a monthly expiry, so generally past 6 to 7 months, we have seen 3 to 4 monthly expiry, we've seen big moves. So for that, we also played in Bank Nifty long strangle by buying 45,700 put and buying 46,100 call at net inflow of 45,50 points. Currently in system, already one spread is open, the long strangle spread, in which we are buying 45,600 put at around 50-60 and 46,000 call. So the net inflow is around 50 to 55 points. तो हम देखा ओवरऑल तो बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस है, and last 10 to 15 minutes में we have already seen a good dip, again corrective move of 100-150 points in bank nifty. निफ्टी में भी हमने 30-35 पॉइंट का डिप देखा है. So option strikes, if we see on radar for bank nifty, will be playing with the put side. Bank nifty we are tracking puts of 45,600, 45,500. 45,600 is quoting around 60, but still we are looking at the setup. And if we talk about the intraday, so from past 5 hours it is forming lower as low lows, जो indicate कर रहा है कि pressure intact है ऊपर की तरफ और धीरे धीरे base नीचे की तरफ shift हो रहा है. So you're tracking, and soon we'll be updating the strikes for Hero Zero in Nifty and Bank Nifty both, and we'll be flashing the strikes on terminal in a bit. In the meantime, we can go with long strangle spreads by buying 45,600 put and buying 45,900 call at net inflow of around 55 to 60 points. जो इंडिकेट
So in the meantime, we are also checking the data. So Nifty ka VWAP tha 19700, and post that since morning it was holding 19700, but जैसे 19700 ब्रीच किया, हमने अच्छा खासी गिरावट देखी है 60 से 70 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी अगर हम इंट्राडे चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली लोअर हाइज बना रहा है। सो अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो मेरे सबसे मोमेंटम ज्यादा रहेगा बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में इंट्राडे रेजिस्टेंस हो जाएगा 45,750 और डाउन साइड में 45,600 एंड 45,500। Option data also indicates 45,500 has a maximum put to buy, whereas on the upside, call writing is intact at 45,700 and 45,800. So that is likely to be a resistance zone on the immediate basis. So we are tracking hero zero strikes for Nifty and Bank Nifty. For Bank Nifty, we are tracking 45,600, 45,500. And for Nifty, particularly, we are talking tracking 19,650 strike. And mainly if you see, so there is a selling pressure in majorly heavyweights. ब्रॉडर मार्केट के बारे में अगर बात करें तो ऐसा मेजर इंटेंसिफाइड सेलिंग प्रेशर नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स देखें तो मार्जिनल स्पाइक हुआ है 2 to 3%। सो मेजर स्पाइक नहीं है, बट as we are seeing the price action, it is forming continuously lower highs, lower lows. So we are tracking puts and we are going to flash it soon. Yeah, so we have flash Bank Nifty put 45,600 strike on radar, and in Nifty 19,650 put on radar. So Bank Nifty का भी put चल रहा है 45,600 around 60 to 70 की range में। इसका इंट्राडे सपोर्ट है अराउंड 2530, अपसाइड में रेजिस्टेंस है 95 110 लेवल्स। इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी 19650 पुट अभी चल रहा है 40 की रेंज में। इसका इंट्राडे सपोर्ट है अराउंड 28-25 और अपसाइड में मूवमेंट है 55-60 का एक रेजिस्टेंस जोन है। सो वी आर ट्रैकिंग एंड सून विल बी एडिंग कॉल्स इन द सिस्टम। So we are continuously tracking 19,650 put. यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है 25 के आसपास, हम इसको प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड बनते हुए दिख रहा है 50 to 60 के आसपास। राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग नियर 35-36 rupees. So keep a watch on this on the flip side. Overall, we are seeing that there can be some momentarily bounce can be seen. तो उसको हम utilize करेंगे for getting into the puts. But just wait for this put to come to clear 28-25 zones and then we can plan our trade. और हम system में भी डालेंगे तो yes.
या सो वी हैव एडेड बैंक निफ्टी पुट 45,600 जो हम ट्रैक कर रहे थे वो ये अभी ऐड किया है. सो वन कैन गो ऐड इन बिटवीन 45 to 55 की रेंज में. अभी भी 55 चल रहा है और स्टॉप लॉस 0 रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी में और थोड़ा मोमेंटम है. तो हम ये स्ट्राइक अभी ऐड किए, फ्लैश भी किया है. सो करंट लेवल पे थोड़े डिप पे भी बाय कर सकते हैं 35 से 40 की रेंज में. स्टॉप लॉस 0 क्योंकि बैंक निफ्टी तो थोड़ा वोलेटिलिटी और मंथली एक्सपायरी है. सो इसमें हमने बैंक निफ्टी में कॉल पुट ऐड किया है एंड निफ्टी में भी हम देख रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं और जल्दी उसमें भी सेटअप के हिसाब से विल ऐड. या तो बैंक निफ्टी इफ यू टॉक अबाउट, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अभी 50 के कोट कर रहा है, 45,600 का पुट. सो अपसाइड में हम अगर चार्ट जाते हैं तो चार्ट पे सेटअप के हिसाब से ऊपर में रेजिस्टेंस है अराउंड, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 75 और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 90-95. तो हमें ये ध्यान रखना है कि मंथली एक्सपायरी है और लास्ट आवर है तो जनरली स्विंग्स भी बड़े हो सकते हैं. तो हमें वो चीज में ध्यान रख के अपसाइड में फर्स्ट टारगेट है 75-80 और देन नेक्स्ट टारगेट 100. सो वो हमारा व्यू रहेगा बैंक निफ्टी के पुट में. 45,600 का पुट ऑलरेडी अभी ओपन है. Yeah. So recently we have added Bank Nifty put 45,600 and it is quoting between 40 to 55 range. We have kept stop loss at 0 and on the upside resistance is seen at 75-80. So if you talk from a level perspective, 45,700 is the immediate resistance zone for Bank Nifty on intraday basis, and we can see more downside once Bank Nifty breaches 45,600 spot levels for another 50 to 70 points down take. So right now also it is quoting around 45-50 range. And if you see since morning, we have seen good momentum in Bank Nifty. Already Bank Nifty have corrected more than 600 points from its intraday high. So keep the sizing accordingly. Don't be too aggressive because it's a monthly expiry. Spikes could be there. But yeah, play with the trend. As we have seen on the intraday chart, there's continuously downtrend. So we are playing with the trend. And right now also it is quoting around 50 to 55. Intraday support is around 20. Upside resistance is 75-80. You're also tracking Nifty put, 19,650 put, that is quoting around in range between 35 to 40. And soon we'll give an update on Nifty put as well. So we have seen a good minor spurt in Bank Nifty put towards 62-63 levels. So friends, as soon as you see any spike or any movement, be quick to book it because it's a monthly expiry and we have seen good swings in the last couple of monthly expiry also. So be quick and then wait for new setup. So we have seen some dip in Bank Nifty put. We've seen a spike to over 60 levels and then now it's now quoting around 40, 43. So in Bank Nifty also, intraday chart also, Bank Nifty is trading in range of 45 to 50 points. Either ways, a breakdown could give a momentum of 40 to 50 points on the future as well as, and on the option we can see a spurt of 20 to 30 points. So Bank Nifty put is around quoting around 40 and Nifty put we have seen some cool off from high levels. 19,650 put is around quoting around 30-32. So we'll be tracking that and soon we'll be adding that. Also from past couple of days, we are seeing there's a good uptick post 3 p.m. Last time also doing Fin Nifty expiry also we could seen a good uptick post 3 p.m. So during that point of time, there could be some swings. So we have to keep that thing in mind. And that's why we have given Bank Nifty put with keeping stop loss 0 because there could be a dip and then again there could be a spot. So right now Bank Nifty put 45,600 that we have given in the system is quoting around 35, 40, 40, 42.
some dip is seen, and Nifty put is consolidated between 28 to 32, 33 levels. If we see the intraday chart only, so intraday chart, we have seen a sideways in smaller time frame chart. If you see 5 minutes and 10 minutes, so Bank Nifty is consolidating in range of 35 to 40 points, and Nifty is also consolidating range of 15 to 20 points. So along with that, if we see the volatility index chart, so we have seen some spurt in volatility in last 15-20 minutes. However, the upper band is 12, but on intraday chart, we have seen some spike. Still, the major momentum is missing. But if you see, it is not surpassing any intraday levels. Nifty's intraday resistance is around 19,650, whereas Bank Nifty intraday resistance is around 45,700 levels. So we have seen some cool off in Bank Nifty put, and in Nifty also put, we have seen some cool off from higher levels. 40 it was quoting, now it is around 25, 24 levels. So even we are waiting for any momentum, as soon as we'll see any momentum, we'll add a Nifty put as well. And if you see since morning also, we have seen less momentum comparatively in Nifty. Last half an hour, last 1 hour, we have seen some correction, but major momentum seen was Bank Nifty, and Bank Nifty has been underperforming since morning. So now Nifty put, again, we have seen a move from 25 to 30, 32 levels. And Bank Nifty put is already open. It is now around 30 to 35 levels. So if you see Bank Nifty, there's a range on the lower band. It went up to 30 levels. Now it's again back to 44, 45 levels. Nifty put went to 25. Now it's back to 34, 35 levels. So guys, keep this thing in mind. The swings are there, but the swings is within a smaller range. So we have to play that range and be quick to exit. It's fine if the trade is not working, but it's make sure you manage your risk properly. So yeah, we even checking the chat box. Someone has asked 45,600 put when to buy. So हम काफी टाइम से recommend कर रहे हैं. इसकी range है नीचे में 35, upper band है 60, 65, 70. Right now it's quoting around 50. So if you see there's some swing within that range.
सो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 40 से 45 की रेंज में, जीरो का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 70-75 के टारगेट के लिए। निफ्टी का पुट भी अगर हम देखें तो नीचे 26-27 मारा था, अभी बैक टू अराउंड 38-40 लेवल्स है। थोड़ा हमने कूल ऑफ भी देखा है, और इंट्राडे सेटअप हम देखे बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा ऊपर से कूल ऑफ हुआ है, 30 से 40 पॉइंट का डिप आया है, जब जिसके वजह से थोड़ा पुट भी बढ़ा है 45,600 का, अभी 57-58 थोड़ा सा मूवमेंट आया है। सो गाइस बी क्विक टू बुक इट ऑल्सो, एंड अगेन वेट, एनी डिप आएगा तो वापस एंटर करना फॉर एन अपसाइड मूव। तो बैंक निफ्टी अभी भी वही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में हमने थोड़ा पुट में मोमेंटम देखा है, नीचे से 26-27 वाला भी 40-45 हुआ है, ऊपर से थोड़ा कूल ऑफ भी है। निफ्टी 630 जो इंट्राडे सपोर्ट था उसको ब्रीच करके अभी 612-610 के पास चला, डे लो के पास में ही है। बैंक निफ्टी भी डे लो के पास में ही है, इसके लिए हम एट द मनी के पुट ही गए। And guys, again, I like to repeat, from past many days we are seeing 3 p.m. tick. So generally 3 p.m. के बाद थोड़ा स्विंग्स बड़े होते हैं, तो वो स्विंग्स आप ध्यान रखना, प्रॉफिट बुक करते रहना, या तो कम लॉस होगा तो उसमें भी आप एग्जिट करना और वेट करना फ्रेश सेटअप के लिए। पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंग रखना, मंथली एक्सपायरी, सो लास्ट के 15-20 मिनट्स वी कैन सी अ गुड स्विंग इन बैंक निफ्टी एज वेल एज इन निफ्टी। Someone has asked on the chat box 19650 का पुट shall I buy now? अभी 38-40 के पास चल रहा है, थोड़े से डिप पे अराउंड 32-33 लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का पुट भी साइडवेज हो गया है, अराउंड 45-50-55 की रेंज हो गई है। टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली नीचे जा रहा है, थोड़ा मोमेंटम हमने देखा बैंक निफ्टी के पुट में, गुड 60-65-70। सो जिसने भी बाय किया वो बुक कर सकते हैं। निफ्टी के पुट में भी मोमेंटम देखा हमने, 26-27-28 वाला 45-46 हुआ है। सो गाइस कीप बुकिंग प्रॉफिट्स एंड वेट फॉर अनदर डिप। So yeah, Bank Nifty has finally breaches 45,600 also, and we have seen good momentum in put 45,600 now quoting around 70-72. So guys keep booking profit. Nifty put में भी अच्छा momentum आया है, 52 26 वाला 50 चला गया है. So guys keep booking profits.
So guys, we have seen good momentum in Nifty, Bank Nifty put both. So keep booking profits, and that's all from our side. Thank you. Thank you overall the team, and we have seen good momentum. Soon we'll be coming out more trades on the next expiry. That will be Fin Nifty expiry. So that's what from our side, from our team, from the research team. And thank you guys. I hope you have a great coming expiry series. That will be start of the August series. And the put is also increasing. Bank Nifty, Nifty, both put is at the day's high. So that's all. And thank you from our side.